Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Can you see and hear me, right? All of you? सभी को सुने आ रहा है? आवाज आ रही है? Yes. Okay. Can you see the screen? PowerPoint presentation? Yes. Okay. Before starting the lecture, I just want to share how to upload your assignment in Google Classroom. सभी को जम रहा है? कोई एक आंसर दो प्लीज मुझे. सभी को आ रहा है गूगल क्लासरूम में कैसे अपलोड करते हैं? सभी को नहीं आ रहा है मैम. नहीं आ रहा है तो आई विल मैं आपको स्टेप वाइज बताती हूँ कैसा करना है. ओके, जस्ट ध्यान से सुनो. आप आपका गूगल क्लासरूम खोलोगे, आपको वहाँ असाइनमेंट दिख रहा है. वहाँ दो डॉक्यूमेंट दिख रहे होंगे, एक रूब्रिक्स डॉक दिख रहा होगा और एक असाइनमेंट डॉक दिख रहा होगा. बराबर? यस और नो? आंसर? Yes मैम. Yes. Now rubric doc को आपको नहीं खोलना है. You have to open up the assignment doc. Assignment doc have two questions. Question 1 is having 5 short one-line answers. Definitions है या give reason है. Am I right? Yes मैम. Okay. Then उसके बाद नीचे आपका assignment document है, उसको आप open करोगे. Assignment document open करने के बाद again what you are seeing is you will be seeing क्वेश्चन 2 में आपको आंसर इन ब्रीफ है, वो 5 क्वेश्चन है. रूब्रिक में 6 क्वेश्चंस के मार्क्स आए. डोंट वरी, योर मार्क्स विल बी गिवन फ्रॉम 5 क्वेश्चंस. ठीक है, वो टेंशन मत लो कि कितने मार्क्स आपको मिलने वाले. आई एम गोइंग इट टू गिव इट फ्रॉम 30 मार्क्स. ओके, नाउ इसका आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट द आंसर इन नोटबुक. नोटबुक का पिक्चर आप अपलोड कर सकते हो या नोटबुक को स्कैन करके तो अपलोड इट एज अ डॉक्यूमेंट फाइल और यू कैन अपलोड इट एज अ पीडीएफ फाइल. अब अपलोड कैसे करोगे? आप जहां असाइनमेंट कर रहे हो वहां नीचे आ रहा है हैंड इन करके. ओके, वहां नीचे आता है एक साइन दिखता है प्लस अटैचमेंट. तो प्लस अटैचमेंट पर क्लिक करोगे तो आपका अटैचमेंट अपलोड होगा और उसके ऐड अटैचमेंट के नीचे आता है हैंड इन. अटैचमेंट अपलोड होने के बाद हैंड इन को जब आप क्लिक करोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होके मेरे पास आ जाएगा. इज इट क्लियर मैम? Yes. हमने ऐसा किया कि जो भी हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया था, हाँ. उसके जो इमेजेस थे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट किया. हाँ, सारे इमेजेस का एक पीडीएफ बनाया और वो पीडीएफ का नेम हमारे नेम से दे दिया. बिल्कुल. ऋतिक जायसवाल असाइनमेंट नंबर 1. और ओके. उसको अटैच फाइल में एक ही फाइल अटैच करके हैंड इन कर दिया. हाँ, वैसे ही करना है. हैंड इन करोगे तो मेरे पास आ जाएगा. सेक्शन में. यस. तो मैंने ऑलरेडी 2 लोगों की चेक करके भी भेज दिए. तुम लोग का आज सबका आ जाएगा तो आई विल गिव द कमेंट्स. हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे ये पूछना है कि आप लोग को जब क्वेश्चन आता है राइट इन ब्रीफ, ओके, एंड इट इज फॉर 5 मार्क्स, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना है. 5 मार्क्स के लिए फॉर एग्जांपल आपको एरोसोल पर शॉर्ट नोट थी. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एरोसोल. तो इसमें अगर आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है तो डोंट राइट इन डिटेल अबाउट द प्रेशर फिलिंग मेथड एंड कोल्ड फिलिंग मेथड. समझ में आ रहा है आपको? यू हैव टू राइट what is the principle behind aerosol. Okay, then what are the various components of aerosols. Then you write down in brief, just mention the methods. What are the 2 different methods for filling the aerosol, cold filling method and pressure filling method, and then you write down the application. ठीक है. क्या होता है एग्जाम में अगर आप 5 मार्क के लिए इतना बड़ा आंसर लिखोगे, पीपी का पेपर लेंथी आता है, आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे. ओके, और आप मार्क्स लूज करोगे. तो ये बात का ध्यान रखो. दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आया था राइट अ नोट ऑन पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, तो जो मैंने अभी तक के आंसर्स चेक किए, आप लोग डायमंड और ग्रेफाइट को इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दे आर नॉट यूज मेडिसिनली. डू वी यूज इट एज एन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट? नो. सो गिव द, आप एम्फेसिस दो
थियोब्रोमा ऑयल पर यू गिव एम्फोसिस ऑन ड्रग्स लाइक सल्फामीटर, कॉर्टिसोन एसीटेट। बहुत सारे मार्टिन में ड्रग्स के एग्जांपल दिए मैंने, 2 एग्जांपल डिस्कस किए थे, सल्फामीटर डिस्कस किया था, कॉर्टिसोन एसीटेट किया था, बट बहुत सारे बार्बिचुरिक एसिड्स है जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में अवेलेबल है, मार्टिन में दिया है। तो ज्यादा आपका आंसर एम्फेसिस शुड बी ऑन गिविंग द एग्जांपल व्हिच इज फार्मास्यूटिकल रिलेवेंट रेदर देन आप मेटल सल्फर को डिस्कस करो या डायमंड को डिस्कस करो। ओके, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। और जब भी आप आंसर लिखो मेक श्योर अगर एग्जांपल्स है तो राइट डाउन द एग्जांपल्स। ओके, हेलो क्लाउड्स मेथड में कैसे एक्सप्लेन करना है? क्लाउड्स मेथड में तो आप लोग ने जो आंसर लिखा है वो बराबर है। क्लाउड्स मेथड में जो मैंने आंसर्स चेक करी हूँ, जैसे उसमें लिखा है आपको, मैंने पीपीटी में दिया था वैसे ही लिखा है, बट मैंने पीपीटी में जब जस्ट ओरली मेंशन कर दिया था कि इट इज वर्किंग ऑन जूल्स थॉमसन इफेक्ट एज वेल एज द इंस्ट्रूमेंट इज अलाउड टू डू द मैकेनिकल वर्क, तो आप लोग ने वो जूल थॉमसन इफेक्ट कहीं भी नहीं मेंशन किया। यू आर गेटिंग द पॉइंट। लिंडेज मेथड इज वर्किंग ऑन जूल थॉमसन इफेक्ट, बट जो क्लाउड्स मेथड है वो दोनों पर काम कर रहा है, इट इज वर्किंग ऑन क्लाउड्स जूल थॉमसन इफेक्ट एज वेल एज द मशीन इज अलाउड टू डू द मैकेनिकल वर्क, तो वो दोनों प्रिंसिपल आपको लिखना जरूरी है। तो ये जस्ट एक याद रखो। एंड व्हेन यू आर राइटिंग क्लाउड्स मेथड, अगेन एग्जांपल, फाइंड आउट द एग्जांपल्स ऑफ gases which is being converted by clouds method into a liquefied gas. Okay, अगर पता चलता है तो write an example, 1 or 2 example of gas which is being converted by the clouds method into a liquefied gas. So it will give more benefit to the answer. ठीक है? Yes, स्टेट ऑफ मैटर अपना कंप्लीट हुआ था। वी हैव स्टार्टेड विद फेज इक्विलिब्रिया एंड फेज रूल। मैंने ऑलरेडी फेज रूल डिस्कस किया था। यू वांट मी टू डिस्कस इट वंस अगेन कि डायरेक्टली वन कंपोनेंट सिस्टम पर जाना है? पार्डन, बोलो। यू वांट मी टू डिस्कस डायरेक्ट वन कंपोनेंट फेज? सब समझा था आप लोगों को सबको? यस मैम। ओके गुड, ऑल ऑफ यू। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब मैं लॉग आउट कर रही थी मैंने चैट बॉक्स में देखा था या कोई बोला कि फेज फिर से एक्सप्लेन करो फेज रूल, इसलिए पूछ रही हूँ। मैम क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर क्या? वो बताओ ना एक बार उसका कांसेप्ट। You want to talk about pressure and critical temperature. Critical temperature and critical pressure. Okay, now when we are talking about the gases, okay, now gases is being divided into 2 types. We have ideal gas and we have real gases. Okay, ideal gas किसको बोलते हैं? Which the gas which obeys the ideal gas law, that is PV is equal to nRT. नॉर्मली जो आइडियल गैसेस रहती है दे कैन नॉट बी लिक्विफाइड, आप उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट बिकॉज most of the majority of the gases are not behaving in an ideal manner, they are behaving like real manner. It means कि जैसे ही आप उनका प्रेशर बढ़ाओगे या टेम्परेचर कम करोगे so the gas could be converted into a liquid state. Okay, there you can make a liquefied form of the gas like liquid carbon dioxide, or you can make liquid hydrogen, or you can make gas like liquid hydrochloride. Hydrochloride is a gas but we have converted into a liquid hydrochloric acid. Okay, so इसको कैसे convert कर सकते? They can be converted below their critical temperature and critical pressure. Now critical temperature is a temperature जिसके नीचे अगर आप काम करें, वो टेम्परेचर के नीचे अगर आप काम करते हो तो यू कैन कन्वर्ट द गैस इनटू लिक्विड। बट अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर रखे, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज हाउ मच? वाटर वेपर का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? इट इज अराउंड 324 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? यस। अगर 324 डिग्री सेल्सियस रखते हो या 326 डिग्री सेल्सियस रखते हो और आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हो गैस पर, यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट द वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर, बराबर? सो दिस टेम्परेचर बिकम्स क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, टेम्परेचर बिलो विच द गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ओके, और अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर अगर रखते हैं, अगर 322 रखते हैं, it is temperature below critical temperature of water vapor,
और इस पर जो slightest pressure लगेगा that will be our critical pressure. Okay, so this is critical temperature and critical pressure which is needed to convert a gas into a liquid. ठीक है, clear हुआ? Yes, ma'am. Okay, so we will start with the lecture phase equilibria and phase rule. Last lecture में we have talked about phase rule. Phase rule was given by very important question. इस पर question आता ही आता है. I will tell you ये part पर कितने questions आ सकते हैं. Okay, phase rule was given by J. Willard Gibbs. It is also known as Gibbs phase rule. Okay, Gibbs phase rule का equation याद कर लो. It is F is equal to C minus P plus 2. F is number of degrees of freedom which is needed to define a system. C is number of smallest constituent which is needed to describe a system. P is phase. Okay, now degree of freedom could be temperature, it could be pressure, it could be concentration, it could be viscosity, it could be refractive index, or it could be any point. Okay, when we say degree of freedom, it means it is an independent variable. वो वेरिएबल जिसको हमको फिक्स करना पड़ेगा ताकि सिस्टम एक फेज में एग्जिस्ट हो, और इफ यू वांट द सिस्टम टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेजेस. ओके, कंपोनेंट इज smallest number of constituent which is present in a system and which can be defined, or which we can express it in a form of chemical formula or chemical equation. हमने एग्जांपल देखा था कैल्शियम कार्बोनेट का. Okay, when we are talking about calcium carbonate, it could exist in three phases: solid, liquid and gas, calcium carbonate, calcium monoxide and carbon dioxide. But ये system को हम three components से नहीं describe करेंगे. We can describe it by using any two component. Okay, we can take calcium monoxide as calcium carbonate minus carbon dioxide. So the system can be defined by two chemical formula: calcium carbonate and carbon dioxide. Water का हमने example देखा था. Water can exist in three phases: water vapor, water liquid and ice. But what is the chemical constituent? The chemical constituent is expressed only by one chemical formula, that is H2O. Okay, so that system will become a one component system. Water phenol की बात करें तो the system can exist in two liquid phases. Okay, we can have same state of matter, but when the phases are immiscible, then we say it is existing in two liquid phases. But this is two liquid phases and having two components. We have one chemical constituent as phenol and one chemical constituent as water. So system will become two component system which could exist in two phases or which could exist in one phase. Okay, so phase, what we have defined phase, it is a homogeneously physical distinct portion जो दूसरे portion से separate हो जाए by a definite bond. हमने simple example देखा था water and kerosene, or water or oil, water and benzene. Both of them are in liquid phases, but they are being separated by a boundary. Please mute कर दो. जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट करो, आवाजें आ रही है बहुत. मैंने इसको स्प्रे मारे. म्यूट द माइक्रोफोन. और ये डब्बे के अंदर भी था. वो रंदे अभी तू ये खोलेगा ना, इसके अंदर पैकिंग होगी तो भी स्प्रे मारने का, ऐसा बोल रहा था. म्यूट द माइक्रोफोन प्लीज. किसका खुला है? ऋतिक ऋतिक प्लीज म्यूट द माइक्रोफोन. ओके, ठीक है. सभी को डिस्टर्ब होता है बेटा, म्यूट इट. क्वेश्चन के आंसर के वक्त ही ओपन करो आप लोग. ओके, देन वी हैव स्टार्टेड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने देखा था. नाउ वी हैव स्टार्टेड विद वन कंपोनेंट सिस्टम. ओके, simple example of one component system is the water system. Okay, water could exist in three phases, and if it is existing in three phases, how many degree of freedom is needed to define the system? Okay, now this, as I have said in the last lecture, this graph, this diagram, when we are plotting the diagram of vapor pressure versus temperature. One second, कुछ problem हुआ है. When we are plotting the graph of vapor pressure versus temperature, this diagram we call it as, कोई एक आंसर करो. When we, hello, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, when we are plotting vapor pressure versus temperature, this diagram is known as, अगर fill in the blanks में आया तो क्या होगा?
Triple point graph. No. Very important. ये आगे चल के भी आपको काम में आएगा. When we are plotting two independent variables. These are 2 degrees of freedom which is needed to define a system. Where we are plotting vapor pressure versus temperature. This diagram, this graph, this figure is known as phase diagram. Okay, PHASE, phase diagram. They are called as phase diagram. Okay, we have this phase diagram is a 3-dimensional structure or 2-dimensional structure. It is a 2-dimensional structure. We can draw it on a paper, and by drawing it on a paper, we can study how many phases a system could exist in. Okay, now this is a one component system. Why it is a one component system? Because we are talking about water. How much is the chemical constituent in water? Only one chemical constituent. That's why has become one component system. Now this phase diagram is explained by the line OA, OB, and OC. Okay, all of you can see it in the graph, in the slide. Okay, now OA, this curve, OA curve is known as the vapor pressure curve of water. Okay, now why it is a vapor pressure curve? Because if you go on the pink line OA, at this line, the water is existing in equilibrium with liquid